Now we are doing extra sums, which are, some are very similar to textbook, some are little bit different. Some are similar but data is different. Some are not similar, their data is also different and their way of asking is also different. Find the distance between, here see, question is very simple. Distance between points, 2 points are given. But हमको आज तक points कैसे दिया था? न्यूमेरिकल. इधर points notation में दिया है 81 square 281. In future you will learn these are the points on parabola, parametric points on parabola. B is 82 square 282. So naturally your answer will be in terms of A and T, okay? T1 greater than T2. Formula तो वही लगानी है. What is formula for distance formula? AB is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 is a t2 whole square minus a t1 whole square plus 2a t1 282 minus 2a t1 whole square. Clear? Now here I will take out a square common from all this. A square is common, तो अंदर क्या आया? T2 plus T1. मैंने क्या निकाला इसमें से? देखो, a square भी बाहर निकाला और T2 plus T1. T2 plus T1 whole square into T1 minus T2 whole square. मैंने फैक्टर ले लिए, इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया, स्क्वायर बाहर निकाला और T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को मैंने लिया T2 माइनस T1 एंड T2 प्लस T1, सो दोनों को स्क्वायर दे दिया. प्लस इसमें से मैंने 4a स्क्वायर बाहर निकाला और अंदर आया T2 माइनस T1 होल स्क्वायर. आई हैव रिटन इन सच ए वे सो दैट आई कैन टेक आउट कॉमन. ए स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 होल स्क्वायर में बाहर निकाल दूंगे तो बाहर आएगा a टाइम T2 माइनस T1 और अंदर क्या आया? अंडर रूट T1 plus T2 whole square plus 4 unit square unit. This is my array distance to unit. This is answer of distance AB. Clear? So थोड़ा algebraic trick लगाना है. Okay? Now second question is point P0 minus 7 is the points of intersection of y-axis. This is point on y-axis and it is a point of intersection of y-axis and perpendicular bisector of line segment joining the points A minus 1 0 and B 7 minus 6. You did this sum again. Point 0 minus 7 is a point of intersection of y-axis and a perpendicular bisector of line segment joining A and B. So P is a point of intersection of y-axis and a perpendicular bisector of line segment joining points A and B. So you know any point on a perpendicular bisector of line segment joining two distinct points are always equidistant from these 2 points. That you have learned in your lower standard. Okay? हमको पूछा है, is this true? Right? Is this
true. Point this is a point of intersection of y-axis and perpendicular bisector of line segment joining this. Is it true? Now if P is a point of intersection of y-axis and perpendicular bisector of line segment joining the points A and B, then it is a point on a perpendicular bisector of AB, so it should be equidistant from A and B both. So if I am getting AP is equal to PB, then I can say this is true. If AP is not BP, then I can say this is not true. So AP आएगा अंडर रूट, पहले तो हम क्या करेंगे, या AP निकालेंगे. ओके, अंडर रूट देखो 0 minus 1 square, so 1 square, plus minus 7 minus 0 square, so 49. So it is coming root 50. Okay. Now I can get BP. BP is also 0 minus 7 whole square, so 7 square, plus minus 7 plus 6, or minus 6 plus 7 whole square, so it is 1. So root 49 plus 1, that is also coming root 50. Okay, clear? So my AP is equal to BP. Clear? AP is equal to BP. Therefore, it is true. Right? And P07 lies on y-axis. And it is at a distance root 50 units from both A and B, both points -10 and 76. So this statement is true. Clear? P is point on y-axis, so coordinates of P are 0 minus 7, that is also true. And AP is equal to BP, that is root 50, root 50. So this statement is 101% true. See, way of asking is different, right? मगर हम use तो distance formula ही करते हैं ना. Third, a parallelogram has 3 vertices. Then find the 4th vertex, right? And they are in a order. A parallelogram has 3 vertices in order, as A minus 2 1 minus 1, B 1 0, and C 4 3. Then find the 4th vertex. Here I can use the properties of parallelogram. You know properties of parallelogram में diagonal bisect each other. So हम पहले क्या लेंगे? Let the coordinates of 4th vertex D R X Y ले लिया मैंने. Now you know diagonal bisect each other. Therefore midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD. This is a property of parallelogram. Midpoint of AC is minus 2 plus 4 upon 2, comma minus 1 plus 3 upon 2. Clear? A का x, A और C का x coordinate ऐड किया डिवाइड बाय 2, A और C के y coordinate ऐड किया डिवाइड बाय 2. Now midpoint of BD मतलब B और D के x coordinate ऐड किया डिवाइड बाय 2, B और D के y coordinate ऐड किया डिवाइड बाय 2. Now two entries are equal. Two order pair are equal if their first entry is equal to first entry and second entry is equal to second entry. Because upon 2 compare करने की जरूरत नहीं. So that implies my x is 1 and y is 2. So my 4th vertex D is 1 2. Clear? Because x is 1 and y is 2. Clear?
Now question number 4. All the question which are little bit twisted that I have given to you. Find the length of the medians of triangle whose vertices are given 7 minus 3, 5, 3 and 3 minus 1. Okay. First of all, I have to draw triangle ABC. Clear? A, B, C. Right? Suppose I want to find out median A. तो E के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4, 1 मिड पॉइंट ऑफ BC. क्लियर? सो पहले हम क्या लेंगे? D किसका मिड पॉइंट लेंगे? AB का, E BC का और F AC का. तो D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 6, 1 मिड पॉइंट ऑफ AB. F के कोऑर्डिनेट आएंगे 5, -2 मिड पॉइंट ऑफ AC. मिड पॉइंट निकालना आपको आता है. So D, E and F are the midpoints of AB, BC and CA respectively. So their coordinates I have written in the figure. So now I have to find out the length AE, BF and CD. Okay. So now I find out the length. देखो D के कोऑर्डिनेट कैसे निकाला समझ में आया? 7 plus 5 by 2 and -1 plus 3 by 2 and that is D61. समझ में आया ना? कैसे आया? E के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करने का? BC का मिड पॉइंट 8 by 2 and 2 by 2 and that is E is 4, 1. Same way you can find out coordinates of F. Now I am asked to find out the length of 3 median. तो पहले हम क्या निकालेंगे? मीडियन AE. तो डिस्टेंस फॉर्मूला A और E के कोऑर्डिनेट लेंगे 7 minus 4 whole square plus -3 minus 1 whole square. देखो फिगर में इट इज अंडर रूट 9 plus 16 so 5. क्लियर? 5 यूनिट. स्क्वायर रूट की लाइन लंबी हो गई. It is under root 9 plus 16 and that is 5 unit. Then median BF वो क्या आया? अंडर रूट 5 minus 5 whole square plus 3 plus 2 whole square that is also under root 0 plus 25 and that is also 5. देखा? एंड मीडियन, दो मीडियन तो सेम आए. एंड मीडियन CD वो क्या आया? अंडर रूट 6 minus 3 whole square plus under root 1 plus 1 whole square and that is under root 9 plus 4 and that is root 13. Clear? Clear? Now question number 5. If 0, 0, 3 root 3 and XY form an equilateral triangle, then find XY. Clear? Find XY. See, first of all, I draw the figure. A, B, C. A के कोऑर्डिनेट हमने 0, 0 दिया है, B का दिया है 3 root 3 and C का XY दिया है. And I have to find out the coordinate of C. So, now triangle ABC is equilateral triangle. A plane geometry का नॉलेज यूज करो. Is an equilateral triangle. तो equilateral triangle में क्या इक्वल होता है? 3 angles and 3 sides. Right?
मगर इधर हमको एंगल का क्या करना है? वी कैन टेक साइड्स, BC is equal to CA. 3 sides are equal. So that square are also equal. AB square, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर में ली जाती है. अब पहले हम AB स्क्वायर का वैल्यू लिखे 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर. क्लियर? 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 होल स्क्वायर. BC स्क्वायर के लिए लिखे हम x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - √3 होल स्क्वायर. ओके. और CA स्क्वायर के लिए लिखे हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. क्लियर? नाउ फर्स्ट आई इक्वेट दिस 12 with x square plus y square. Okay. Minus 6x minus 2 √3y plus 12. First is equal to second. N is equal to third. So first x square plus y square is 12. That is one of the equation. I equate 1 with 3. So that is my relation number 1. Then I equate this second with third. So x square plus y square minus 6x minus 2 √3y स्क्वायर को ओपन किया. ओके. इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गया. सो आई ब्रिंग एवरीथिंग ऑन दैट साइड. तो 6x प्लस 2 √3y minus 12 is 0. This is my number 2. Now I have to solve this equation number 1 and 2 in order to get x and y. Okay. So, solving 1 and 2. 1 and 2 solve करो. क्या आएगा? 2 √3y is equal to 12 minus 6x. So, what is my y? Substitution method. 12 minus 6x upon 2 √3. That I put in this equation. X square plus y square is 12. Put it here. It is x square plus x की जगह y की जगह लिख दिया 12 minus 6x whole square upon 2 √3 का square 12 is equal to 12. So take overall LCM 12. 12x square plus 144 minus 144x plus 36x square is equal to 144. Clear? Open किया square मैंने. Bring everything on one side. 48x square minus 144x 144x is equal to 0. Implies 48x common निकालो. अंदर x minus 3 is 0. Implies x is 0 और x is 3. जब x is 0 लेंगे तो y क्या आएगा? 12 upon 2 √3. So that is 2 √3. Okay. And जब x is 3 लेंगे तो y क्या आएगा? 12 minus 18 upon 2 √3. तो मिलेगा मेरा minus 6 by 2 √3. So that is minus 3 by √3 and that is minus √3. So what are my two possible points? The coordinates of CR XY can be 0, 2 √3 or 3, minus √3. There are two possible answers. The coordinates of C are clear. Coordinates of C are either 0 to √3 or 3, minus √3. Are you clear? Solving 1 and 2 we got x की दो वैल्यू, x की करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू के सामने we get y की भी दो वैल्यू. Clear? Clear? That complete your now. Still there are some extra sums. See sum number 6. If point PXY is equidistant from A plus B, B minus A and B
a minus b, comma a plus b. Clear? Find the relation between x and y. Very good sum. See, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, मगर इधर ए और बी के कोऑर्डिनेट कैसे दिए हैं? न्यूमेरिकल नंबर में नहीं दिए, नोटेशन में दिए हैं. पी ए स्क्वायर इज पी बी स्क्वायर. ओके, दैट इम्प्लाइज, चलो पी ए स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर, राइट, प्लस वाई माइनस बी माइनस ए ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर. ए साइड पी बी, सो एक्स माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में होल स्क्वायर. क्लियर? नाउ आई ओपनिंग द स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मिडल टर्म इज माइनस 2 टाइम a प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर. एक ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन किया आप. दूसरा y स्क्वायर माइनस 2 टाइम b माइनस a इंटू वाई प्लस b माइनस a होल स्क्वायर. दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन किया इज इक्वल टू RHS एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम a माइनस b इंटू एक्स प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर. एक ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन किया. दूसरा ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 2 टाइम मिडल टर्म a प्लस बी इंटू वाई प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर. देखा? अब दोनों साइड से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो. एक्स स्क्वायर कैंसिल विथ एक्स स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल विथ a प्लस बी होल स्क्वायर, y स्क्वायर इज कैंसिल विथ y स्क्वायर, b minus a whole square cancel with a minus b whole square. So what is left? Minus 2a minus 2b plus 2 time a minus b into x. अब x एक साइड लिया और minus 2 a plus b plus 2 time b minus a ब्रैकेट कंप्लीट y. एक साइड x एक साइड y. तो ये सबको सिंप्लीफाइड किया तो क्या आया पता है? माइनस 4bx बचा इधर और इधर माइनस 4ay बचा. देखो 2a कैंसल, माइनस 4b इंटू एक्स, सो माइनस 4bx. इधर 2b कैंसल, सो माइनस 4a इंटू वाई. दैट इम्प्लाइज bx is ay. डोंट यू फाइंड आउट? इज इट नॉट अ गुड सम? इट्स अ गुड सम. क्लियर? Now question number 7. Find the coordinates of the point which is equidistant from the 3 vertices of the triangle AOB as shown in the figure. देखो, आपको है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालना है विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 vertices of triangle AOB. Your triangle is like this. This is my x-axis, this is my y-axis, and my O is here, and my AB is here. Okay? Suppose AB का कोऑर्डिनेट मैंने 2x0 ले लिया एंड ए का कोऑर्डिनेट मैंने 0 2y ले लिया, क्योंकि ए इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस सो x कोऑर्डिनेट 0, b इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस सो y कोऑर्डिनेट 0. मैंने डबल लिया. क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर में मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी. तुम x0 एंड 0y भी ले सकते हो. आई हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 vertices ऑफ दिस ट्राइंगल.
So that point must be a midpoint of the hypotenuse, okay? This triangle AOB is a right angle at O, right? Right? So the point which is very equidistant from the three vertices of right angle triangle is always a midpoint of hypotenuse. So my P must be, coordinates of P are 2x plus 0 by 2 x and 2y plus 0 by 2 is y. So I have to find out Pxy, which is equidistant from O, A and B. So it is the midpoint of the hypotenuse. Answer is the coordinates of point which are equidistant from the three vertices of triangle AOB as shown in the figure are Pxy. It is a midpoint of the coordinates of A are given 0 to y, coordinates of B are given to x0, O is 0, 0. And you are asked to find out a point which is equidistant from O, A and B, and that is the midpoint of the hypotenuse. So I write here point equidistant from three vertices of a right angle triangle. It's a right angle triangle, okay? Is the midpoint of the, a property है plane geometry, midpoint of the hypotenuse. So midpoint of hypotenuse, midpoint of AB are, अब कैलकुलेट करो तो आएगा 2x plus 0 by 2 and comma 0 plus 2y by 2. So that is xy. Clear? Totally theoretical question. And question number 8 is, if L minus 1, 2 and M 4 minus 5 are the 2 points, find the coordinates of P such that LP is 2 by 5 LM. Law. Division of line segment का सम है. And P lies on the line segment. Right? So हम क्या करेंगे? Let the coordinates of P are XY divide LM in ratio 2:3 from L. Clear? क्यों मैंने आपको बोला 2 by 5 is to 3 by 5, so 2:3. Clear? Ratio आ गया. So now, therefore, the coordinates of point P are, क्या आएगा? देखो L को मैं क्या ले लूंगी? -1, 2. इसको मैं x1, y1 ले लूंगी. M को क्या लूंगी? 4 minus 5. इसको मैं x2, y2 ले लूंगी. और P को क्या ले लूंगी? xy. M को क्या ले लूंगी? 2. और N को क्या ले लूंगी? 3. तो what are my coordinates? 2 into 4 plus 3 into -1 mx2 plus nx1 upon L plus M. my2 plus ny1 upon L plus M plus N. So that is मेरा coordinates आएगा 1, -4 by 5. बराबर? Clear?